Welcome to the science class, children. Hello, everybody. Today, in this video lecture, I would like to tell you about the measurement of speed. I will tell you how we can measure the speed. As we know that speed is equal to distance upon time. Now, before telling the calculation of speed, I would like to tell you about one device, that is odometer. Odometer of a car or any vehicle is a device which can read the distance traveled by that vehicle. Odometer is a device which can easily tell the distance traveled by a particular vehicle. Now let us see the numerical flashing on your screen. An odometer of a car reads 12,000 km at the start of the trip and 12,400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, find the average speed of the car. जब ट्रिप स्टार्ट की तो ऑडोमीटर की रीडिंग थी 12,000 किलोमीटर. जब ट्रिप फिनिश हुई तो ऑडोमीटर की रीडिंग 12,400 किलोमीटर थी. इसका मतलब वो कार कितना ट्रेवल किया उस कार ने. इन दोनों डिजिट्स को आपस में हम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 400 किलोमीटर्स, क्योंकि 12,400 तो बाद में हुई और पहले क्या रीडिंग थी उसकी 12,000 तो पहले थी ही उसमें. तो उसमें से 12,400 में से 12,000 माइनस कर देंगे पहले वाली रीडिंग तो 400 किलोमीटर्स आएगा, जो कि डिस्टेंस है उस व्हीकल ने कार ने ट्रैवल किया. फाइन. कितनी देर में वो ट्रिप कवर हुई, टाइम कितना है 8 आवर्स. नाउ व्हाट वुड बी द एवरेज स्पीड. तो सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले गिवन वैल्यूज़ लिखते हैं. गिवन वैल्यूज़ आपकी क्या हो गई. डिस्टेंस इज इक्वल टू 400 किलोमीटर्स, टाइम इज़ इक्वल टू 8 आवर्स. तो फिर उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में फार्मूला लिखते हैं. फार्मूला क्या हो गया. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार अपॉन टाइम टेकन. नाउ we will put the values 400 kilometers above upon 8 hours. After calculation it would be 50 kilometers per hour. That is how we can calculate the speed. If we have the distance covered, if we have the time, we can easily put the values and can calculate the average speed. Got it? Now in this activity there is an ordinary wooden board kept at an inclined at different angles. एक बोर्ड रखा है जिसको एक एंगल से खड़ा किया गया है. Now various objects like pencil, toy car, plastic ball, glass ball, tennis ball are rolled down the inclined plane. Different objects को हमने roll किया. आपको arrow mark भी दिख रहे होंगे. इस inclined plane पर roll किया. तो what we will observe that different objects will travel different distance in different time. So there is a different time, so we can do, we can easily calculate the average speed in each case. So there is a table given here. We will write the name of the object, and each object will cover different distance. We will write in front of it, and it will take different time. We will also write the time, and then with the help of the formula we can easily calculate the average speed. Okay, now see some simple numericals. These are very easy. So we have already studied that there is a relationship between the distance covered, speed and time. If two things are given to us, third can be easily calculated. Let us see the numerical. The Shatabdi Express takes 6 hours to travel from New Delhi to Lucknow. New Delhi से लखनऊ जाने के लिए 6 hours लगते हैं शताब्दी को. And average speed शताब्दी की 80 kilometers per hour है. Find the distance from New Delhi to Lucknow.
अब इसमें गिवन वैल्यूज़ क्या हैं? इसमें टाइम दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है और डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. दिस फॉर्मूला also you can learn. Now distance is equal to speed into time. Speed is 80 kilometers per hour and time is 6 hours. When you will multiply, so it will become 480 kilometers. So 480 kilometers is the distance. Now from this numerical we can also find out the time taken by an object to cover a given distance. If we have to calculate the time, we will put the formula time taken is equal to distance covered upon speed. Fine. So this is how you can easily calculate distance, speed and time by keeping the values in the formula. It's very easy to calculate. Now one more numerical in which we have to calculate the time. In this, the distance from Delhi to Chandigarh is 250 kilometers. A bus travels at an average speed of Itna. How much time would it take to travel from Delhi to Chandigarh? Now again we will write the formula. Time taken is equal to distance covered upon speed. Distance is 250 kilometers, speed is 50 kilometers, and time taken will be, if we'll divide, we'll get 5 hours. Is that clear? I hope you can easily calculate the distance, time and speed if the values are given to you. Fine. Now we'll proceed towards another topic, graphs. We all know that a given idea or concept become easier to understand if we can give up in a pictorial form. The idea or concept then appears to become alive as it was. Graphs are generally used in science and maths and other fields also, and it is a pictorial and alive representation. Graphs are pictorial and alive representation. What is the importance of the graph? They enable us to communicate information in an interesting and visual manner. Fine. Depending on the information to be conveyed and its use, we draw many types of graphs. There are many types of graphs like bar graphs, pie graphs, linear graphs, straight line graphs, and some other types of graphs too. Of these, line or linear graphs are used most often in science. The most often, usually which types of graphs are generally used in science? These are linear graphs, okay? Straight line or linear graphs. We can all, on the screen, two types of graphs have been shown to you. बार ग्राफ, इनमें बार दिखाया गया हुआ है ना, मैथ्स में आप ऑलरेडी करते हैं ये. एंड पाई ग्राफ. फाइन. तो पाई ग्राफ में आपको मेथड्स ऑफ ट्रैवलिंग टू स्कूल, किस किस चीज़ से बच्चे अपने स्कूल जा सकते हैं, उसको एक पैराग्राफ में न लिख के कितने इंटरेस्टिंग वे में ग्राफ से समझाया गया है, डिफरेंट कलर्स से, है ना. कि जो ऑरेंज कलर है वो टैक्सी से जाते हैं, है ना. डिफरेंट कलर्स हैव बीन शोन. Instead of reading the paragraph, we can easily understand the things with the help of such colorful graphs. We can also use graphs to describe the motion, distance, time graph. I have already told you that in science, linear graphs have been described the motion of an object. On such a linear graph, we generally choose. In the graph, there are two things. आप ये देख रहे हैं नीचे, मैथ्स में आपने पढ़ रखा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इट इज़ एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है इट इज़ वाई एक्सिस. फाइन. नाउ एक्स एक्सिस को हम टाइम के लिए चूज़ करते हैं, इट इज़ टाइम एक्सिस, एंड वाई एक्सिस को हम डिस्टेंस के लिए चूज़ करते हैं. फाइन.
We choose appropriate scales to represent the value of the distance and time. और हमने जो इसमें मार्क कर रखा है, अलग अलग डिस्टेंसेस शो कर रखे हैं, 5 किलोमीटर्स, 10, 15, 20 इक्वल इंटरवल्स पर हमने मार्क बनाए और उसी हिसाब से हमने डिस्टेंसेस उसमें लिख दिए हैं. स्केल जो हम बनाते हैं जिस पे हमने 5, 10, 15 लिख रखा है, it should not be such large and too small. It should be such that it enables us to utilize the maximum part of the graph. Now mark the values of the distance and time according to the chosen scale. For example, इसमें टाइम टेकन है, आवर्स में दिया हुआ है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर और डिस्टेंस 5 किलोमीटर. सपोज 1 आवर में कितना ट्रैवल करता है, 5 किलोमीटर्स. 2 आवर्स में 10, 3 आवर्स में 15, 4 आवर्स में 20, 5 आवर्स में आपका 25. तो आपने क्या करा है, इनको लाइन को जॉइन कर दिया है और सारे पॉइंट्स को एक मिला दिया है ना. तो ये जो स्ट्रेट लाइन आई है आपकी, ये किस वजह से आई है, क्योंकि जो मोशन दिखाया है इसमें किसी ऑब्जेक्ट का वो यूनिफॉर्म मोशन है. यूनिफॉर्म मोशन वी ऑलरेडी नो that it covers equal distances and equal intervals of time. Hope you have understood this. So that's all in today's video lecture, children.